नमस्कार आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वी वार्मली वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड like, comment, share the video as much as possible in society and retired bankers groups etc. or where as you like it। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाया और कोर्ट्स के बारे में कुछ थोड़ी सी बताया, कोर्ट्स में क्या क्या हुआ है। और मैंने उसमें आपसे बताया था कि मैं आपको लेटर पढ़ के सुनाऊंगा जो हमने भेजा था। ये लेटर भेजा था और भी कई लेटर हमने भेजे हैं। 27 अथॉरिटी को ये भेजा था हमने और जिसमें नेतागण भी हैं। ये पत्र डीएफएस को, एफएमओ को, पीएम को, आईबीए को, प्रेसिडेंट को और आईबीए चेयरमैन को के और सीएचबी और यूएफबीओ के बाकी लीडर्स को और रिटायरी लीडर्स को, आचार्य जी और दूसरे जो भी हैं, इन सब को भेजा था। 27 लोगों को। मेरे और भी बहुत सारे साथियों ने भेजा था लेटर, तो मैं इस आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और भी 2-3 लेटर हैं, बाद में किसी वीडियो में सुनाऊंगा। एक लेटर हम आजकल में डाल रहे हैं, कुछ लोगों ने भेज भी दिया। रेस्पेक्टेड मैडम, pension revision in public sector banks. In respect of above long outstanding issue, I wish to submit that a wrong narrative has been established that there is no provision of pension updation in the pension regulation 1995 and that the pension of banks is a funded scheme. MOF, Ministry of Finance, has given reply in Parliament and an affidavit has been submitted by IBA on behalf of the banks, which confirms my submission. My submission is a last attempt to clarify the factual position. My submission is a last attempt to clarify the factual position just before the final argument expected to be held in Supreme Court on 20th November 2023। ये 10 नवंबर को हमने भेजा था लेटर। So that the Solicitor General of Government of India may not argue before the bench hearing the argument on falsely created perception which may not be in the interest of justice to 6 lakhs or more pensioners. First, it is false perception that pension scheme is a funded scheme in banks. I wish to clarify that it is funded by the employees' bank share of provident fund which he surrendered in lieu of option pension in 1994. It is pertinent to mention some points which need your attention. That number 1, regulation allowing is regarding actuarial investigation of funds according to which the bank shall cause an investigation to be made by actuary every year into financial conditions of the fund every year on 31st March and makes such annual contributions to the fund as may be required to secure the payment of benefits under these regulations. The condition laid down as above is not followed by many banks. Number 2, banks did not contribute
its share as agreed to the pension fund at the time of giving second option, whereas banks recovered 156% of bank share of PF from retirees. Number 3. During the difficult time of Corona, some banks did not even added their share of monthly contribution equal to monthly contribution made by employees. These may be the reasons of funds constraints, financial constraints for which banks are responsible, but the punishment is being given to the pensioners by delaying updation on false pretexts. Even then, there is no crunch of funds and the banks are in very comfortable position to make pension revision on the formula of Reserve Bank of India. Secondly, I wish to clarify that as per Memorandum of Settlement dated 29th October 1993, signed under ID Act 1947, binding on all parties, it was unambiguously made clear that proposed pension scheme will be on pattern of RBI pension rules and central government pension rules applicable to their employees. Later on, it was discussed and approved by in the small committee constituted to frame the detailed regulations held on 26th March 1994 regarding eligibility for pension scheme, creating and maintenance of pension fund, dearness allowance, updation, etc. Finally, it was approved by MOF and passed by Parliament of India, which made it legal document applicable and dedicated to pensioners of PSBs. If the clause of updation revision was not incorporated in the Pension Rules Regulation 1995, it was a lapse on the part of the banks which may be rectified by the amendment by the Board of Directors at any time, because it was well discussed and approved by the committee, small committee, and discussed in Parliament. It is unfortunate that instead of making necessary amendments, the government and IBA are taking shelter of their own lapse and presenting false position in Parliament as well as in Supreme Court. While concluding, I earnestly request your honor that the government, being the owner of Punjab National Bank, public sector banks, should ensure that the regulations meant for pensioners are not interpreted or distorted wrongly by any union in connivance with IBA, causing financial loss and mental harassment to the pensioners, and pension updation revision is not further denied. Please ensure to place the correct picture of pension regulations 1995, which has legal sanctity, and be given due regard by giving approval for pension revision on the similar lines of RBI with retrospective effect from 2019, the date on which was revised in pension revised in RBI. Regards R.K. त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद। ये तो साथियों मेरा पत्र था,
लेकिन ये पत्र मिस्टर रमेश भटेजा जी हैं, उन्होंने ड्राफ्ट किया था और सभी लोगों को एक ही पत्र, एक ही माध्यम, एक ही था कि भाई एक ही लिखे। तो उसके आधार पर सभी ने और उन लोगों ने भी लिखा, मैंने भी लिखा और ये भेज दिया है ना। और भी कई पत्र भेजे, तो मैंने इस पत्र में आपको ये बता दिया कि भाई किस तरह से अनेक साथियों ने ये लिखा है, अलग अलग नामों से सबने अपने अपने नाम लिखकर, मैंने भी अपना नाम लिखा। 4 नवंबर 2023 को भी हमने एक पत्र मेल लिखा था, मैंने भी, एक अन्य लोगों ने भी वो लिखा था। और एक अन्य पत्र कुछ साथियों ने लिखा है, मैंने वो आज या कल में पत्र मेल अपने नाम से भेजूंगा उनको, डिटेल भी किसी अन्य दिन किसी अन्य वीडियो में दूंगा। और एक पत्र की डिटेल और भी मेरे पास है, वो भी मैं किसी दिन आपको सुना दूंगा। तो ये वो पत्र वाली बात थी जो मैंने आपको बताई। धन्यवाद साथियों, नमन, सैल्यूट। सहपरिवार मंगलमय हूँ, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। सभी एक्टिविस्ट साथियों को, रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को नमन, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति, जय हिंद। वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी बात आगे तक पहुंचे। थैंक्स सर, आर के त्यागी का जवाब।